Hello guys, welcome back to my channel. My name is Arpita and today I am going to create this look. This is basically the recreation of my first videos look जिसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था मेरे चैनल के बारे में और अगर अभी तक आपने उसको चेक नहीं किया है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके देख सकते हैं। और ये जो लुक है ये एक बेसिकली न्यूड ग्लैम लुक है, ओके, जो हम आज क्रिएट करने वाले हैं। आप इस लुक को खुद के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, अपने फैमिली के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। ये लुक बहुत अच्छा लगता है वेस्टर्न के साथ, इंडियन के साथ, आप इसको किसी भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हैं। ओके गाइस, तो मैं अपने हर एक वीडियो में एक ब्यूटी हैक बताती हूँ और अगर आपको वो जानना है तो ये वीडियो आप प्लीज़ एंड तक देखना और अगर आपको पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ओवर देयर। सो लेट्स स्टार्ट। Okay guys, so I have well cleansed my face, I have well toned my face and also moisturized my face. So directly I'll go to my primer. आज मैं नायका का प्राइमर यूज़ करूँगी and I'll just take one drop और मैं इसको अपने पूरे फेस में लगा लूँगी। Primer is very important to start with your makeup guys because अगर आप प्राइमर नहीं लगाएंगे तो आपका जो मेकअप है वो केकी लग सकता है और जो आपका टेक्सचर है वो भी दिख सकता है। ओके, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अपने प्राइमर से जो भी आपके स्किन में जो भी फ्लॉज है, जो भी आपका पोर्स, ओपन पोर्स है, उसको आप एक लेयर बना दें। ओके, एंड देन यू स्टार्ट योर मेकअप। टुडेज़ हैक ऑफ द डे इज़ जब भी आप प्राइमर लगाओ तब आप जो ये स्ट्रोक्स है ये डाउनवर्ड मूवमेंट में आप यूज़ करना ताकि जो भी आपके फेस में छोटे छोटे बेबी हेयर्स है वो सारे दब जाए। ओके, ऑलराइट, सो आई विल डायरेक्टली स्टार्ट विद माय आई मेकअप फर्स्ट। ओके, एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू टेक अ कंसीलर और आज मैं LA गर्ल प्रो कंसीलर यूज़ करूँगी। एंड अब मैं इस कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करूँगी। दैट आई एम गोइंग टू यूज़ अ ब्रश फर्स्ट। जस्ट टेक अ फ्लैट ब्रश लाइक दिस। डोंट फॉरगेट द इनर कॉर्नर ऑफ योर आईज क्योंकि वहाँ पे भी पिगमेंटेशन होते हैं, सो यू नीड टू हाइड इट इज वेल। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेक डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर और मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। सो नाउ आई एम गोइंग टू सेट दिस वन विद अ ट्रांसलूसेंट पाउडर बाय शुगर कॉस्मेटिक्स। Brush. Okay, I'll just take a little bit of it. Okay, very minimum. Okay, tap out the excess and you can always use your finger to blend any harsh line if there. So now next I'm going to use is an eyeshadow palette. This is from SFR color, okay, and it's called Heated with Love. Okay, so I'll be picking a eyeshadow brush and I'll pick up this light brown shade called rose gold. Okay, मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया है and I'll tap off the excess. Okay, and now I'll start with the outer corner. Okay, outer V. यहाँ पे आपको जो आई शेडो है उसको पुट करना है। Okay, and then you do this वाइपर मूव। जो आपका क्रीज लाइन है वहाँ पे एक ट्रांजिशन क्रिएट करना है। दिस इज़ योर क्रीज लाइन।
जब आप आँख खोलते हैं तो ये जो क्रीज एक क्रिएट होता है, दैट इज़ योर क्रीज लाइन. ओके, सो यू हैव टू क्रिएट अ ट्रांजिशन ओवर हियर. आई विल डू द सेम प्रोसीजर. अब मैं एक इसे थोड़ा सा डार्क शेड लूँगी जिसका नाम है बॉन बॉन. ओके, कैन यू सी दिस बॉन बॉन? ओके, एंड आई विल टेक द प्रोडक्ट, tap off the excess, and again I'll build the product first to the outer corner. Okay, like this. मैं इसको ज़्यादा अंदर लेके नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं इसको सिर्फ बाहर की तरफ ही रखूँगी. Okay, to create a depth. Okay, can you see the difference? I just wanted this. And now liquid eyeshadow. This is by Nika K. Okay, and I'll take it और मैं इसको इस तरह से पूरे अपने आईलिड में लगा लूँगी. मैं इसको जो है हाफ आईलिड में लगाऊंगी. ओके, लाइक दिस. एंड दैट्स इट गाइस. नाउ आई विल जस्ट ब्लेंड इट आउट. तो मैं एक क्लीन ब्रश लूँगी. ओके, आई विल टेक अ small blending brush, and again I'll go back to my palette और मैं ये जो सबसे लाइट शेड जो मैंने फर्स्ट लिया था वो मैं पिक करूँगी. ओके, and I'll just blend it. Blend the edges basically. ऑलराइट गाइस, तो मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर ही एक मैं शिमर आई शेडो लगाऊंगी क्योंकि ये लिक्विड है ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए. सो आई विल टेक दिस वन कॉल्ड बॉदर्ड. ओके, दैट्स इट गाइस. अब मैं जो मेरा ब्राउन आई शेडो है उसको यूज़ करूँगी, एंड दिस इज़ फ्रॉम Forever 52. एंड उसके साथ ही एक ब्रश आया था छोटा सा. आई यूज़ दैट ब्रश इटसेल्फ, एंड आई जस्ट टेक सम प्रोडक्ट. मेरा आई मेकअप ऑलमोस्ट हाफ डन है. अब मैं डायरेक्टली अपना फेस कंप्लीट कर लूँगी, एंड देन आई विल गो बैक टू माय आईज. ओके, सो फॉर द फेस मैंने ऑलरेडी प्राइमर यूज़ कर लिया है. अब मैं डायरेक्टली कलर करेक्टिंग करूँगी, एंड फॉर दैट टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ माय पर्पल पैलेट. ओके, एंड आई विल टेक अ स्मॉल फ्लैट brush like this. Okay, and I'll pick this orange corrector. और जो भी मेरे डार्क सर्कल्स है या फिर जो पिगमेंटेशन है मेरे फेस में, मैं उसको इससे हाइड करूँगी. Okay guys, so now I'll just blend it out with my beauty blender. Okay guys, तो मैंने इसको पूरा ब्लेंड कर लिया है अच्छे से. अब मैं डायरेक्टली फाउंडेशन यूज़ करूँगी. ओके, एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ माय फेवरेट फिट मी फाउंडेशन. ओके,
will just take a pump. Okay. और मैं इसको थोड़ा सा वार्म अप करूँगी. ओके. And then I'll just put dots. Okay. Now I'll take my beauty blender. And I'll just blend my foundation there. Okay guys, तो मैंने अच्छे से अपने जो फाउंडेशन है उसको ब्लेंड कर लिया है और अब मैं अपना जो हाइलाइटर पॉइंट्स है उसको मैं हाईलाइट करूँगी. एंड फॉर दैट आई एम गोइंग टू यूज़ माय अगेन फेवरेट मेबलिन हाइलाइटर. That's it. Again I'll blend it out. And now we will give some color to our face and we'll use contour for that. And today I'm going to use my Swan contouring palette. I'll take some product, tap off the excess, and I'll start from here. Similarly the other side. I'll also use it on my forehead, my jawline. Now we will powder lock our face. Tap off the excess and I'll use the same palette and I'll pick up this one. Okay, the peachy pink one. I'll tap off the excess. And now we will go back to our eyes. Small brush. Okay. And I'm going to pick this bonbon. Okay. A little. Tap off the excess. I will take liner, pearl white eyeliner from Miss Claire. Okay, and I will just line my. And now I will put on some highlighter. Okay, and for that I'm going to use my Swiss Beauty Brick Highlighter palette, and I'm going to take a brush. मैं जो है अपना आई लैशेस कर्ल कर लूँगी एंड देन आई एम गोइंग टू यूज़ माई मस्कारा. I'll use my favorite, you can say my really favorite, the Color Bar Zoom and Bush Mascara. मुझे ये इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें दो ऐसे ब्रश आते हैं. एक ये दिस पतला वाला और एक आता है दिस थिकर वन. ओके, जिससे बहुत अच्छे से आप कर्ल कर सकते हो. इट गिव यू दैट फॉल्सीज वाला लुक. I'll put some in my lower lashes. I'll just quickly do my brows and come back. Okay guys, so I'm back and now quickly we will do our nose contouring and the lips. Okay, flat angular brush, take some product,
So we are done with the look and I'll just get ready and come back. Thank you so much guys for watching. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर कर देना एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़. मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी एंड कीप सपोर्टिंग मी. आई विल बी बैक विद माय न्यू वीडियो सून. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू.